बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एलटीएस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। और दोस्तों, आज का पेपर खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर जो कि 6 अप्रैल 2019 को हुआ था, and it was the most difficult paper in the history for computer operator. कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए इतना मुश्किल पेपर दोस्तों हिस्ट्री में कभी भी नहीं आया था, और मेरे ख्याल के मुताबिक के लेक्चरशिप के लिए भी इतना मुश्किल पेपर मुश्किल से आया होगा। एनी हाउ कोशिश करते हैं कि उसके हल करके अपलोड करूं। तो देखिए दोस्तों, एक पेज मेरे पास ये वाला, इसमें तकरीबन 27 क्वेश्चन है। यहां पर ये नजर नहीं आ रहा सही तरह, तो इसलिए इसको मैं MS Word में लिख चुका हूं ताकि आसानी से पढ़ा जा सके। और इसको हल करने के बाद बाकी क्वेश्चन भी इंशाअल्लाह ताला अपलोड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, KP पब्लिक सर्विस कमीशन कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर है और 6/4/2019 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 को जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, अ फंक्शन दैट इज बोथ एन इंजेक्शन एंड सर्जेक्शन, तो उसको 1 to 1, 1 to many, 1 to 1 and 2 और 1 to 1 one way। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन C है दोस्तों। और दोस्तों बताता चलो आपको कि चूंकि पेपर इंतहाई मुश्किल है, हमारे लेवल का नहीं है और DIT लेवल का भी नहीं है। मोस्टली पेपर कैंडिडेट्स जो थे वो DIT के थे, इसलिए जहां पर मुझसे गलती होगी, अगर ज्यादा गलती हो गई तो मुझे कमेंट्स में लिख दे, मैं वीडियो को दोबारा नोट कर लूंगा। अगर एक आधी गलती होगी तो उसको आप खुद करेक्ट कर लें, ठीक है दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं कि तुक्का नहीं लगाना। जिसको 100% पता हो कि क्वेश्चन ये गलत है, इसका सही आंसर आप मुझे भेज दें। थैंक यू। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास दिस वन, देखें। This is question number 2. A means of indicating the way a function varies in magnitude as its argument tend to some limits, usually 0 or infinity. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन B। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन B है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैंक स्पेस है इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक दैट कंबाइंस डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनहेरिटेंस। तो यहां पर देखिए ऑप्शन A में लिखा हुआ है सब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑप्शन B एब्स्ट्रैक्शन, ऑप्शन C लीनियर प्रोग्रामिंग एंड ऑप्शन D object oriented programming, and the correct option is option D। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, the interior structure of the object is entirely hidden from any other object is known as encapsulation। कैप्सूल को देखा होगी आपने दोस्तों। कैप्सूल में जितना मटेरियल्स होता है वो हिडन होता है, तो सिमिलरली एनकैप्सुलेशन का भी यही मेथड है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, एन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ब्लैंक स्पेस इज इन इंटरफेस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन B इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म ये भी कोई और तरीका है। इनकैप्सुलेशन हम पढ़ चुके हैं। डेटा डिफिनेशंस भी इस कैटेगरी में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6,
a term not well defined but applied to software products that provide persistence for applications written in object-oriented languages with features such as rule-based and recovery. तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड डेटाबेस, करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड डेटाबेस इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, an obsolete architecture in which everything, process, files, input, output, operation, etc. is represented as an object. This is what? This is remote object architecture. Option B. Correct option is option B. Question number 8 को जरा देखिए। Question number 8. A special value used to indicate that a variable intentionally contains either no value or an unknown value. That is empty, zero, garbage or null. The correct option is D, null value. Question number 9 को देखें दोस्तों। Question number 9. A number that can count the members of a set, whole number, real number, natural number, none of these. दोस्तों याद रखिए कि काउंटिंग के लिए हम नेचुरल नंबर इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10. An electronic logic gate whose output is logic 0. 0 means false. Only when all 2 or more inputs are logic 0, true. Otherwise it is 1. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको बताते हैं दोस्तों, that is ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। क्वेश्चन नंबर 11. Blank space is the class of formal languages that are recognizable in polynomial time, and the correct option is option A, B. Question number 12 को देखें दोस्तों। Blank space is the class of languages that are recognizable in polynomial time on non-deterministic Turing machine, that is NP. Correct option इसमें option C. क्वेश्चन नंबर 13 को देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, a language is said to be hard if any language NP can be polynomial reduced to it even if the language itself is not an NP. इसमें थोड़ा सा इशारा मिलता है। The correct option is option D. क्वेश्चन नंबर 14 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14. The part of a computer's backing store where files are held are backup system. Correct ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। क्वेश्चन नंबर 15. An MS-DOS, an early version of Windows used, ये तो इजी क्वेश्चन है, पैट इस्तेमाल करता था फाइल एलोकेशन टेबल, so called became it maintain all file sector mapping in the single table. Correct option is option A. Question number 16 देखें दोस्तों। Modern versions of Windows still support PAT, but for hot disks prepare the more sophisticated file system, and that is option
P NTFS। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। The file system is widespread on Unix while there are several file systems available for Linux। इसका जस्ट यही मतलब है कि यूनिक्स कौन सा फाइल सिस्टम इस्तेमाल करता है, तो UFS। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। A social networking website established in 1999 and now ultimately owned by specific media group is MySpace। Correct option D। Question number 19 देखिए, question number 19। Names are converted to addresses by a process of। इसमें थोड़ा सा एम्बिग्यूटी मुझे लग रहा है, इसको जरा चेक कर लें। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। A relational database management system popular in web application first released in 1995 is MySQL। ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल मैसेजेस साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फिजिकल और लॉजिकल ट्रांसमिशन मीडियम is called what? The process of combining multiple messages simultaneously on the same physical or logical transmission medium is called multiplexing दोस्तों। That is called multiplexing। ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 को जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है। इन a device is allocated specific time slots in which to use the transmission medium TDM। Option A, correct option is A। क्वेश्चन नंबर 23 देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। A blank space divides the transmission medium into channels of smaller bandwidth to which the user has exclusive rights। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी FDM। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। An array of dimension greater than 1 is known as multi-dimension array। Multi-dimensional array, option B the correct option। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। A transmission system in which messages are directed to a particular group of nodes on a network is called multicasting। Option A, correct option is A। Similarly, question 26 again. An operating system written by Microsoft to be marketed with the early release of the IBM personal computer, that is MS-DOS। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। A graphical user interface introduced by Microsoft in 1983 for the Intel family of microprocessor is known as MS Windows। Correct option is option B। तो दोस्तों आई थिंक वीडियो लंबी हो रही है, आज के लिए इतना काफी है। बाकी वीडियो इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर लूंगा। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।